So, so past papers question of the topic integration. Let fx equals 4 upon 3x plus 1 times x plus 1 whole square. Express fx in partial fraction. तो अच्छी बात है, partial fraction भी revise हो रहा है इधर. Let's do that. इसकी partial fractions बनानी है. So it's fx, sorry, 4x upon 3x plus 1. And we have repeated factor x plus 1 whole square, but it's linear. इस केस में हम क्या करते थे? It's a upon 3x plus 1. अगर ये खाली स्क्वायर ना होता है इधर, तो हम करते प्लस b अपॉन x प्लस 1. बट क्योंकि x प्लस 1 रिपीट हो रहा है, तो हमने एक दफा फिर लिखना होता है c अपॉन, but this time we write x plus 1 whole square. Now we take LCM, rearrange, and substitute values to get a, b, and c. इधर LCM ले लेते हैं. It's going to be 3x plus 1 times x plus 1 whole square. So we multiply a with x plus 1 whole square. And then we multiply b with 3x plus 1, x plus 1. And we multiply c with 3x plus 1. और right side पे आ गया 4x upon 3x plus 1, x plus 1 whole square. Denominators हो गए cancel. And we get 4x equals a x plus 1 whole square plus b 3x plus 1 x plus 1 plus c 3x plus 1. Okay, अब सब्स्टिट्यूशन करके हम किसी दो को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं. So if I substitute x is equals to -1, then a gets eliminated and b gets eliminated, and we get the value of c. So 4 times -1 equals c times -3 plus 1. So I'm getting -4 upon -2 for c. So c is coming out to be 2. Now what I can do is substitute this to 0. So if we equate 3x plus 1 to 0, then we get x equals -1 upon 3. So when x is -1 upon 3, this becomes 0 and this becomes 0. So we can find the value of a. So 4 times -1 over 3 equals a times -1 over 3 plus 1 whole square. So we get -4 over 3 here, and we get 2 by 3 whole square. I want to divide this directly. -4 upon 3 upon 4 upon 9 equals 8. That gives us -3, I believe. A comes out to be -3. Now for C, in fact for B, take any value of x. So I'm going to take x is equals to 0. So then we get 4 times 0 equals to a is -3, 0 plus 1 whole square. Plus b is what we're trying to find. And 0 plus 1 is 1, and 0 plus 1 is 1. And then plus c times 1c is in fact 2. So we're getting 0 equals -3 plus b plus 2. So b equals 1.
So the partial fractions would be writing that here. A is -3. So we get -3 upon 3x plus 1. B is 1 upon x plus 1. C is 2 upon x plus 1 whole square. कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछो. ओके, फिर पार्ट 2 करते हैं. इसको मुझे क्लियर करना होगा बोर्ड को. Hence, show that integration of fx between 0 to 1 is equals to 1 minus ln 2. So अब हम fx की जगह ना ये partial fractions को integrate करेंगे क्योंकि hence लिखा हुआ. Zero से 1 तक we'll integrate the partial fraction -3 upon 3x plus 1 plus 1 upon x plus 1 plus 2 upon x plus 1 whole square dx. So I'm going to break the integral. I'm going to write -3 integration 1 upon 3x plus 1 and then plus integration 1 upon x plus 1 and plus integration 2 upon x plus 1 whole square. Okay. फर्स्ट टू में तो इंटीग्रेशन का ये वाला रूल लगा है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में fx है और न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव है तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है ln fx. ये केस इधर अप्लाई हो रहा है. ओके, न्यूमरेटर में 3 होना चाहिए, सो आई थिंक इट्स बेटर टू कीप दैट 3 इनसाइड, जिसको मैं बाहर ले गई थी. अंदर ही रहे तो बेहतर है. बाहर -1 लिख लेते हैं और यहाँ पे 3 रहे. So we have the derivative of 3x plus 1 in the numerator. So this will become ln 3x plus 1 and there's a negative sign. So negative ln 3x plus 1 limits 1, 0. Plus, again we have fx in the denominator and we also have its f prime x in the numerator. 1 derivative of x plus 1 to already a numerator. So this also becomes ln x plus 1 और इसकी लिमिट हुई 1, 0. अब जो थर्ड फंक्शन है 2 upon x plus 1 whole square, उस पे ये रूल नहीं एप्लीकेबल क्योंकि x plus 1 whole square की जो डेरिवेशन है वो तो काफी बड़ी है, क्योंकि वो बन गया जाएगा x square plus 2x plus 1. ये है डिनोमिनेटर में. इसकी डेरिवेशन तो होनी चाहिए 2x plus 2, तो वो तो नहीं है हमारे पास न्यूमरेटर में. So we can't use this rule. इसकी जगह नोटिस के पावर रूल लग रहा है कि अगर आपके पास you have fx and it's linear and you have power n on it, then the integration is fx n plus 1 upon n plus 1 and times f prime x in the denominator. Okay, so ये करके देखते हैं. पहले तो I'm going to change it to यहाँ पे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ. ये बन जाएगा 2 times, बल्कि 2 को मैं बाहर लिख, 2 बाहर आ गया और अंदर आ गया x plus 1 पावर -2. तो अब इस पे हम पावर रूल अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन का. So 2 is outside and inside we get function which is x plus 1 और पावर 1 प्लस हो जाती है, so we get -1. डिनोमिनेटर में भी हम वो -1 लिखते हैं और साथ डेरिवेटिव ऑफ x plus 1 which is 4.
So I'm getting minus ln 3x plus 1 limits 1 0 plus ln x plus 1 limits 1 0 and minus 2 upon x plus 1 and again limits 1 0. अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी रहेगी. What I'll do, क्योंकि लिमिट सेम है, so I'm going to apply the limits all together. यहाँ पे लिख लिया 1 0 और इस सबको इकट्ठा लिख लिया minus ln 3x plus 1 plus ln x plus 1 minus 2 upon x plus 1. पहले 1 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है. So 1 सब्स्टिट्यूट करने से we get minus ln 4 plus ln 2 minus 2 upon 2 which is 1. Yeah, the first bracket. Minus, अब 0 substitute करते हैं. So we get minus ln 1. ln 1 0 होता है by the way. Then again plus ln 1. ये भी 0 होगा. Minus 2 upon 1. Just this. This cancels out. And we have minus ln 4 plus ln 2 and minus 1 plus 2. अब हमें exactly इस फॉर्म में दिखाना है. It should be 1 minus ln 2. तो अब ये करके देखते हैं. इधर 1 तो आ जाएगा. Now 4 can be written as 2 square. So the 2 comes down, minus 2 ln 2 plus ln 2 plus 1. So we get minus ln 2 plus 1. ये शो करना थोड़ा. तो क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो. Next question. Function f is defined by fx equals ln x whole square for x is greater than 0. The diagram shows a sketch of the graph y is equals to fx. The minimum point of the graph is A. The point B has a coordinate E. Show that, state the x coordinate of A. अब A पे y 0 है. x की हमने y वैल्यू फाइंड करनी है और y 0 है. तो कर्व की इक्वेशन में हम y को या fx को 0 कर देते हैं. 0 equals ln x whole square. स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड्स पे तो ln x आ गया. ln दूसरी साइड पे जाके e बन गया. e पावर 0 equals x. x आ गया 1. Part 2. Show that f double f prime x is equals to 0 at b. ओके बी पे हमें पता है कि x e है. इसका मतलब है हमें डबल प्राइम x फाइंड करके उसमें x की जगह e सब्स्टिट्यूट करना. सो पहले fx लिखते हैं which is this ln x whole square. ओके अब इसकी डेरिवेशन करते हैं f प्राइम x फाइंड करते हैं. तो रूल जरा रिवाइज करते हैं कि fx पावर n की डेरिवेशन का रूल क्या है.
एन नीचे आ जाता है, एफ एक्स ही रहता है, पावर एक छोटी हो जाती है और साथ हम एफ प्राइम एक्स मल्टीप्लाई करते हैं. So use that rule. 2 comes down, power gets reduced by 1, so it's just ln x. And then we derivate ln x again. ln x की derivation होती है 1 upon x. तो ये आ रहा है हमारे पास f प्राइम x आ रहा है 2 ln x upon x. अब इसको दोबारा डेरिवेट कर दो. अब ये प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का. वी हैव अ फंक्शन fx and we have a function gx. If we're derivating it, it becomes f prime g minus f g prime upon g square. ये करना है. तो हमारे पास आ गया 2 ln x की डेरिवेशन हो गई 2 1 by x और उसके साथ x मल्टीप्लाई हो गया, माइनस साइन 2 ln x वही रहेगा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लेंगे, 1 आ गया और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर. तो अब मेरे पास एफ डबल प्राइम एक्स आ रहा है 2 माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके. अब हमने दिखाना है कि बी पे सेकेंड डेरिवेटिव 0 है. तो अगेन बी पे एक्स इज ई. सो एट बी एक्स इज इक्वल्स टू ई. वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. एफ डबल प्राइम ई फाइंड कर रहे हैं हम. So we get 2 minus 2 ln e upon e square. ln e 1 होता है. So न्यूमरेटर में हमारे पास 0 आ गया, डिनोमिनेटर में e square आ गया, which is actually equals to 0. So we've shown that f double prime e is equals to 0. Part 3. Okay. Part 3 है by using the substitution x is equals to eu. Let me write down the substitution first. Show that the area of region bounded by x-axis, the line x is equals to e, and the part of the curve between a and b is given by this. तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है. Let me reread the question. Area of the region bounded by the x-axis, the line x is equals to e, and the part of the curve between a and b is given by this. ठीक है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है और सब्स्टिट्यूशन को यूज करके. सो इधर ए पे हमारे पास वैल्यू एक्स की 1 आई थी, आई बिलीव. सो 1 टू ई इंटीग्रेट करना है एफ एक्स क्या है, एल एन एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया dx. इसको इंटीग्रेट करना है लेकिन उनका है सब्स्टिट्यूशन यूज करके. So we have to use substitution. So first you write the given substitution e is equals to xu. इसको डेरिवेट करेंगे with respect to u. वही हमारे पास आ जाएगा eu. That means dx is equals to e power u du. So dx की जगह ये लिख लिया e power u du. ln x की जगह हम क्या लिख लेंगे, ln x की जगह हम लिख लेंगे e पावर q. और इंटीग्रेशन की अब मैं लिमिट्स नहीं सब्स्टिट्यूट कर रही, क्योंकि जो लिमिट्स है ना 1 टू e,
ये x की लिमिट्स। अब हमें या तो u की लिमिट्स चाहिए, और या तो फिर हम अभी कोई लिमिट्स नहीं लिखते, और एंड में जब हम दोबारा से u को x में कन्वर्ट करेंगे तो तब हम 1 और e लिमिट्स ले लेंगे. So अभी हम are going to write the limits. Okay, so this becomes 4 lne inside the bracket. Using the property of log. And lne is 1. This is 1. So we're getting 16 e power ut. नहीं, एक सेकंड, कुछ गलत किया. सॉरी, वो 4 नहीं था, वो u था. माय बैड. e पावर u था, तो u नीचे आ जाएगा. एंड वी गेट ln e whole square e power ut. Again, ln e is 1. We're getting integration of u square eu du. However, इस क्वेश्चन में लिमिट्स डले हैं. वो कह रहे हैं जो लिमिट्स हैं वो 1 to 0. बट अब यहाँ 1 और 0 कहाँ से आएगा? हमारे पास तो जो इनिशियल लिमिट्स हैं वो x की हैं. अपर लिमिट e है और लोअर लिमिट 1 है. हम x की लिमिट्स को u की लिमिट्स में चेंज करना चाह रहे हैं. सो फॉर दैट यू हैव टू यूज द गिवन सब्स्टिट्यूशन. के जो लिमिट्स है ना, एक्सक्यूज मी, 1 से लेकर e तक, ये x की लिमिट है. सो ये x की वैल्यूज है. जब x 1 है तो u क्या है, और जब x e है तो u क्या है. इधर लिख लेते हैं 1 इज इक्वल्स टू e पावर u. तो फिर u 0 होगा, क्योंकि e की पावर 0 1 बनती है. सो देन u शुड बी 0. एक तो ये आ गई, यहाँ से आया है 0. और जब x e है तो वी हैव e इक्वल्स e पावर u. तो यहाँ पे तो u की पावर 1 होनी चाहिए, ताकि e इज इक्वल्स टू e पावर. तो यहाँ से आया है ये 1. सो जो x की लिमिट्स थी उनको हमने सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला जो हमें गिवन है x इज इक्वल्स टू eu, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया और u की लिमिट्स निकाल दी, which would be 0 and 1. So we get the required integral u square eu du between the limits 0 and 1. Part 4 से hence or otherwise find the exact value of the area. तो अब मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें. It's going to be part 4. This would be integration by parts. So the formula is u v dash equals uv minus integration of u dash v. अब इसमें u वो लेना होता है जो इसमें पहले आए, LIATE. तो हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल है और एक u स्क्वायर इज अलजेब्रा. तो अलजेब्रा पहले आ रहा है, तो हम कह देंगे कि जो हमारा इधर थोड़ी प्रॉब्लम होगी है, क्योंकि यहाँ भी u है और वहां पे भी u है. तो आपने थोड़ा केयरफुल होना है कि ये जो u है दैट्स इक्वल्स टू u स्क्वायर, और जो हमारा v डैश है वो इक्वल्स है e पावर. तो अब यहाँ से हम u डैश निकाल लेते हैं, वो आ गया 2u. और यहाँ से v निकाल लेते हैं. v होता है इंटीग्रेशन, तो e u की इंटीग्रेशन e u ही है. सो सब्स्टिट्यूट in the formula u times v, it's going to be u square times e power u minus integration u dash is 2u times v is eu. तो दोबारा पार्शियल फ्रैक्शन लग रही है. एक दफा आ गया, बाहर आ गया u स्क्वायर eu minus 2 times u e t. दोबारा पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी.
ओके, तो इसको अलग से करते हैं. That is going to be integration of u e u. So हमारे पास algebra है और exponential है. तो algebra u है, so we'll say let u is equals to u, then u dash is equals to 1, and let v dash is equals to e power u, then v is again e power. So u times v minus integration of u dash v. So we're getting this u e u minus integration of e u d u, which is just e u. Yeah. So green part की जगह मैं ये लिख जो अभी रिजल्ट है. Going to be u square eu minus 2u eu minus 2eu. Sorry, this would be plus. Okay. इंटीग्रेशन के हमारे पास लिमिट्स थी इस क्वेश्चन में. हमने e की लिमिट्स चेंज की थी 0 से लेकर 1 तक. या so 0 to 1 हम लिमिट्स अब सब्स्टिट्यूट करेंगे. So we get u sorry, u becomes 1, so 1 power e power 1 is just e minus 2e plus 2e minus 0 minus 0 plus 2. So ये मेरे पास आ गया. ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ e आ गया और यहाँ माइनस. यही आंसर. हैदर और अदन कोई क्वेश्चन है तो बेटे पूछो. नहीं मैम. तो क्वेश्चन थ्री है कौन करना. वो भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन. तो x ln x को इंटीग्रेट करना है. x की लिमिट्स हैं 1 से लेकर 2 तक और पार्शियल फ्रैक्शंस हम करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट. तो हम रूल हमारा है कि l जो होता है वो LIATE होता है. सबसे पहले लॉग हमारा u होता है. तो देन u विल बी ln x and v dash is going to be x. और क्या होती है इंटीग्रेशन ऑफ u v dash equals u v minus integration of u dash v. ये होता है. तो अब इससे हमें u dash चाहिए. ln x की डेरिवेशन होती है 1/x. और इधर से v चाहिए. v इंटीग्रेशन से निकलता है x² / 2 इंटीग्रेशन. अब इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं. u पहले लिखते हैं ln x, फिर v लिख देते हैं x² / 2 माइनस साइन इंटीग्रेशन u डैश है 1/x और v है x² / 2. So I'm getting x² / 2 ln x माइनस इंटीग्रेशन हाफ बाय लिख लेते हैं कोफिशिएंट और अंदर खाली x रह गया. So x² / 2 ln x
minus half x square upon 2 plus c. लिमिट्स प्लस c की जरूरत नहीं है क्योंकि लिमिट्स दी हुई हैं which are 1 and 2. ओके ये बन गया x स्क्वायर अपॉन 2 ln x माइनस 1/4 x स्क्वायर. इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है 2 and 1. पहले 2 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. सो वी गेट 2 स्क्वायर 4 अपॉन 2 2 ln 2 माइनस 1 आ गया. फिर माइनस साइन ln 1 0 हो जाता है. 1 अपॉन 2 ln 1 0 होता है. minus 1 upon 4. So I'm getting 2 ln 2 minus 1 plus 1 upon 4. So 2 ln 2 minus 3 upon 4. इसको ln 4 भी लिखा जा सकता है और ln 4 minus 3 upon. ये 2 की पावर में चला जाता है अगर हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं. आज के लिए इतना ही है. 4 और 5 होमवर्क में ट्राई करना. ठीक है मैम. कल इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं. ओके फिर अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज़.